Hello everyone, I'm Devanshu Sharma and welcome you all to the one-shot revision of comparing quantities for class 8. In this topic, we are going to cover what are percentages, what are ratios, how to do conversion of these things, then what is percentage increment, percentage decrement, then the application of percentages like profit and loss and simple interest and compound interest. We are going to see all these things, and without any further delay, let's start the topic. Since we are talking about comparing quantities, let's do a comparison. So, what do you think? Which one would be cheaper? If the cost price is 100 rupees and we are talking about this particular article, and if the cost price is 120 but there is a discount of 20 percentage and we are talking about another article of the similar nature. So, in this, I have to spend 100 rupees, and if we are talking about this particular article, in this the MRP or the marked price is 120 but there is a discount of 20 percentage. So I'll calculate 20% of 120 which is equal to 24 rupees और उतने का डिस्काउंट मिलेगा मुझे. So final price that I have to pay is 120 minus 24, which is 96 rupees. So I would say even though the cost price was higher, the price was higher in the second case, but I have to pay less amount. So for these purposes, we have to study how to compare different quantities based on percentage and ratios. Okay. Let's do another comparison. Which mixture has more gold? The first one or the second one? First one में 10 kgs total mixture है और gold और silver का ratio है 5:3. And in the second one 15 kg mixture है and the ratio of gold and silver is 2:3. After doing the calculation, I would say कि जो first mixture है उसमें gold ज़्यादा होगा. Let's see how these comparison happens and how to do the calculation of ratios and percentage. Okay, so we'll start with ratios and percentage, and ratio and percentage can be used interchangeably. For example, a class has 40% students as boys. 40% students में boys हैं and is same as saying the ratio of both girls and boys is 2:3. अभी इसको समझने का कोशिश करते हैं. परसेंटेज में वी आर सेइंग दैट 40% बॉयज है. मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अगर टोटल लोग 100 होते, if the total population or the total number of students in the class is 100, उसमें से 40 boys होते, ऐसा. This is the meaning of percentage, to convert the base as 100. If there are a total of 100 students, the number of boys would have been 40. रेशियो में क्या हुआ कि 2:3 का रेशियो है बॉयज इज टू गर्ल्स का. मतलब इफ देर आर 2 बॉयज इन दैट सिनेरियो द नंबर ऑफ गर्ल्स वुड बी 3. तो टोटल बच्चा कितना हुआ? देर आर 5 स्टूडेंट्स, 2 + 3. सो इफ देर आर 5 स्टूडेंट्स, उसमें से 2 बॉयज हैं. बात तो एक ही है. In this also, if you do the calculation, this will also result in 2:5 or 2/5. So that's why we are saying that ratios and percentage are interchangeable. Perfect. Let's talk a bit about percentage. Now, first of all, what are the application of percentages? So the first one is to compare the values and the second one is to track very large numbers. Okay. So let's see how to calculate percentage. Now Ram scored 480 marks out of a total of 600 marks. तो percentage का calculation होता है कि जो भी value का percentage मुझे निकालना है, always remember this thing, जिसका percentage निकालना है keep it in the numerator, जिसके respect में percentage निकालना है. ओके जिसको आपको जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, कीप इट इन द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 100. 480 का परसेंटेज निकालना है, टोटल मार्क्स मतलब 600 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100. दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज. ओके, एंड
if I want to calculate the percentage for 40, Ram hai, Ram has 40 rupees and Sham has 60 rupees. What is the amount of Ram as percentage of the amount of Sham as percentage of Ram? Sham के पास कितने रुपए हैं as percentage of Ram? मतलब राम के कंपैरिजन में, सो आई कैन से कि शाम के पास जितने रुपए हैं उसको राम के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है. सो आई कीप शाम का परसेंटेज इन द न्यूमरेटर, दैट इज 60 रुपीज डिवाइडेड बाय राम का नंबर ऑफ रुपीज इन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100. Okay, so this will be equal to 150 percentage. मतलब शाम के पास 150 percentage अमाउंट है इन कंपैरिजन टू राम. परफेक्ट. नाउ अगर मुझे परसेंटेज दे रखा है तो मैं उसको एब्सोल्यूट अमाउंट में कैसे चेंज करूं? लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट सिक्योर्ड 80 परसेंटेज मार्क्स, तो कितने मार्क्स वो लेकर आया या लेकर आई वो कैसे कैलकुलेट करूं? अभी तो हमने देखा कि मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करा, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करा. नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिवर्स ऑर्डर, परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने वाले हैं. लेट्स सी. सो परसेंट ऑलवेज लाइक ये बहुत इजी तरीका है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इफ आई एम सेइंग 80% ऑफ 400, so always remember this thing, 80 पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400. This is how you will calculate 80% of 400. Similarly, A% of B, A% of B. Easiest way to remember the formula. What is A% of B? A by 100 into B. Correct है? Great. Now 82% of 250 क्या होगा? 82% of 250. Correct. So this is 5 to 10, 5 5 25, and this is 41, 5 4 20, 205 would be the correct answer. But the second question, 64 is what percent of 80? यहां पर वैल्यू दे रखी है and you need to convert it into percentage. मतलब मुझे 64 का परसेंटेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? 80 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये आपको दो डिफरेंट फॉर्मूलाज का एग्जांपल है, साथ में इसलिए दिया सो दैट यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. द फर्स्ट वन इज सेइंग कि परसेंटेज दे रखा है, आप वैल्यू निकालो. सेकंड वन बोल रहा है वैल्यू दे रखा है, उसका परसेंटेज निकालो. दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है. I'll write both the formulas on the same page so that we are able to differentiate it properly. So somebody asked you A% of B calculate karo, so it should be A% of B. This formula you have to apply. Okay, और अगर कोई बोलता है A is what percent of B, उस time A by B into 100. This is the formula we are going to use, and I have told you कि ऐसा क्यों होता है. Correct. Okay, let's do a few questions on these. So in a class, girls comprises 60% of the total strength. Find out the number of boys and girls in the class if the total strength is 180. तो girls कितनी हो गई? 60% of 180. Correct है? So 0000 and you will get the answer 18 into 6, that is equal to 108. Correct? Okay, and the number of boys would be the remaining 180 minus 108, that is 72 would be the correct answer. Okay, now let's talk about what is percentage change. I'm going for one value to the other value, and what is the percentage change? There's another formula for the same. Okay, let's say that the initial value, for example, in my math test in unit 1 I have scored 40 marks, and in unit 2 I have scored 50 marks. Matlab I would say that this is the original value
और द ओल्ड वैल्यू एंड दिस इज द न्यू वैल्यू। इसको दूसरे टर्म्स में भी बोलते हैं दैट दिस इज द इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी होती है। सो एक पहले वाली वैल्यू, एक बाद वाली वैल्यू, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिमेंबर। ओके, सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, हमेशा परसेंटेज चेंज किस पे कैलकुलेट होता है? दैट इज द इनिशियल और द ओल्ड और द ओरिजिनल वैल्यू। पहले वाली वैल्यू पे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट होता है। ओके, सो परसेंटेज चेंज is always equal to final value minus initial value divided by initial value into 100. In this case, final value क्या है? 50, initial क्या है? 40 divided by initial is 40 into 100, which is equal to 1,000 divided by 40, which is 25% का चेंज आया है। अभी हमें ये भी दिख रहा है कि 40 से 50 गया तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हुआ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीमेंट। कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ? नाउ लेट्स टेक अ केस ऑफ परसेंटेज डिक्रीमेंट। लेट्स से पहले वैल्यू थी 40 और फिर 30 हो गई, तो विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। This is the initial value, this is the final value. तो final minus initial divided by initial into 100. अभी ऊपर 30 minus 40 minus 10 निकल के आता है, multiply by 100 divided by 40, ये इससे कटा और 25, मतलब यहां पर -25% है। तो एक्चुअल में जो माइनस है ना, दैट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि डिक्रीमेंट हुआ है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंक्रीमेंट कहलाता है, वैल्यू नेगेटिव आती है तो डिक्रीमेंट कहलाता है। इन द फर्स्ट केस द आंसर वाज +25%, तो आप ऐसा बोलोगे कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। In the second case, the answer was -25%. So you will say that 25% का decrement हुआ है. So the negative sign shows that there is a decrement in the value or decrease in the value. Okay, so now let's do a question of ratio and percentage. Conversion भी देखेंगे इसमें and how to use ratio and percentage to solve a question. So ratio of salaries of A and B. So A इज टू बी का सैलरी दे रखा है, सैलरी का रेशियो दे रखा है 3:5। बाय व्हाट परसेंटेज इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी? ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना परसेंटेज कम है और बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंटेज ज्यादा है। ओके, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। Always remember this thing that if ratio is given, और अगर आपको कोई वैल्यू माननी है, ठीक है, अज्यूम करनी है, तो 3:5 के रेशियो में 3 और 5 वैल्यूज अज्यूम नहीं कर सकते। ओके, तो आप इसको 3x अज्यूम करो और इसको 5x अज्यूम करो। ऑलवेज डू दिस थिंग। ओके, सो इट इज आस्किंग ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना परसेंटेज कम है, मतलब कि हमें किसके रिस्पेक्ट में सैलरी देखनी है? बी की सैलरी के रिस्पेक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द डिफरेंस और द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दीज। तो 2x का डिफरेंस है, सो 2x का चेंज है या डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? B के रिस्पेक्ट में। सो विल कीप B का सैलरी इन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 40%, मतलब A का सैलरी B की सैलरी से 40% कम है। सिमिलरली B की सैलरी A की सैलरी से कितना परसेंटेज ज्यादा है? सो चेंज तो अगेन इज सेम 2x डिवाइडेड बाय, इन दिस केस मुझे किसके रिस्पेक्ट में देखना है? A के रिस्पेक्ट में। सो A की सैलरी विच इज 3x मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 66.66%। सो आई वुड से B की सैलरी A की सैलरी से 66.66% ज्यादा है। Perfect. Now let's move on to the next topic which is discounting. Okay, so discount का concept सेम है परसेंटेज डिक्रीज के। ये बात तो समझ में आती है that if I want to decrease the amount or decrease the marked price, मैं कुछ डिस्काउंट परसेंटेज देता हूं, मतलब वैल्यू में डिक्रीमेंट ही तो कर रहा हूं।
So it is nothing but percentage decrease, and discount is always calculated on marked price. This we have to remember. Discount हमेशा marked price पे calculate होता है. Okay, so let's see a question. A table marked at 15,000 rupees is available for 14,400. Discount कितना मिला? तो देखो, जो मार्क्ड प्राइस था दैट वाज 15,000 और जो सेलिंग प्राइस था दैट वाज 14,400. मतलब मेरे को टोटल डिस्काउंट कितना मिला? द डिस्काउंट दैट आई गॉट इज 600 रुपीज. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज. अभी डिस्काउंट परसेंटेज मतलब उस 600 का परसेंटेज निकालना है. तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है. हमने जो बात करा था किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? Always in the last slide we have seen that discount percentage is always calculated with respect to marked price. तो marked price के respect में तो 15,000 will be in the denominator multiplied by 100 and this will be equal to 4% का discount. I hope we are all able to understand this. Let's do another question. So an almirah is sold for rupees. This is the selling price. So the selling price is 5225 after allowing a discount of 5%. But I don't know what is the marked price. So first of all, let's assume that the marked price is X. ठीक है, अभी X पे मैंने 5% का डिस्काउंट दिया. मतलब the discount that I gave is 5% of X. और ये वैल्यू का डिस्काउंट है. तो मैं मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जानी चाहिए. सो दिस शुड बी इक्वल टू 5225. When I do the calculation, it will be 95x by 100 is equal to 5225 and x would be equal to 5225 into 100 divided by 95 and x का value निकाल के that will be your marked price. Perfect. Okay, now we have talked about discount and selling price, marked price. लेकिन एक बार थोड़ा सा we'll talk about the profit and loss also. Okay, the entire profit and loss का ecosystem. So profit and loss में there are certain things which we have to remember and I'll make a flow diagram जिससे शायद आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहे. Okay, so first of all we start with the cost price. This is the price at which the shopkeeper or the person who is selling the product वो procurement करता है. जितने में शॉपकीपर खरीद के लाया उसको हम कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर बोलते हैं. ओके, अभी शॉपकीपर कुछ खरीद के तो लाया, लेट्स से 100 रुपीज का वो एक आर्टिकल द शॉपकीपर परचेज्ड एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज. नाउ अभी उसको उस पे लेबलिंग तो करनी पड़ेगी दैट दिस आर्टिकल इज फॉर दिस मच रुपीज. तो जो लेबल प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस होता है फिर वो निकल के आता है. मैंने 100 रुपए का प्रोक्योरमेंट किया, मैंने आर्टिकल को खरीदा फॉर 100 रुपीज. अभी मैं उसको अपना शोकेस करूंगा इन माय शॉप. उस पे कुछ ना कुछ प्राइस टैग तो लगाऊंगा. We all have seen price tags on the product. So कुछ प्राइस टैग लगाऊंगा. अभी जो प्राइस टैग लगाया वो प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी मेरी कॉस्ट प्राइस से. If I bought the product at 100 rupees, I'll mark the price at 150 rupees. तो जो भी डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में उसको हम बोलते हैं मार्कअप. ओके, उसको हम बोलते हैं मार्कअप. जितना मैंने बढ़ाया ना कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस पे जाते जाते तो उसको हम मार्कअप बोलते हैं. अगर मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करना है सो इट शुड ऑलवेज बी with respect to CP. मतलब मार्कअप परसेंटेज शुड बी इक्वल टू मार्कअप अपॉन CP into 100. बहुत सिंपल. देन जो भी मार्क्ड प्राइस है in most of the scenarios nowadays there is a discount availed on that. एक कोई डिस्काउंट गिवन होता है तो इस पे कुछ डिस्काउंट परसेंटेज लगता है एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस एंड फाइनली आफ्टर अवेलिंग द डिस्काउंट वी गेट द सेलिंग प्राइस. और सीपी और एसपी में क्या रिलेशनशिप होता है? सीपी पे या तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा
या फिर कुछ लॉस मिलेगा, और ये दोनों प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, ये दोनों सीपी पे कैलकुलेट होंगे। ओके, सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेजेस फॉर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, डिनोमिनेटर में सीपी रहने वाला है, डिस्काउंट परसेंटेज के डिनोमिनेटर में एमपी रहने वाला है, एंड मार्कअप परसेंटेज के डिनोमिनेटर में अगेन सीपी रहने वाला है। ओके, perfect. Now, let's see a little bit of a few relationships between these. So, अगर मैं CP में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मुझे SP मिलेगा। जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड करूंगा, देन आई विल गेट SP। अगर CP में से लॉस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे SP मिलेगा। इन केस ऑफ अ लॉस आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम CP, तो मुझे SP मिलने वाला है। Now, if I want to calculate profit percentage, that should be equal to profit upon CP into 100. If I want to calculate loss percentage, it is loss upon CP into 100. Discount की अगर बात करूं, discount is equal to MP minus SP. Okay, and the discount percentage is equal to whatever the discount is divided by MP into 100. These are some of the formulas जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। Okay, let's do a few questions on the same. So Sohan bought a second hand refrigerator for 2500 और उस पे उसने 500 रुपीज का रिपेयर करवाया। So total cost price for Sohan should be equal to whatever the selling price of the product, जो भी जितने में भी उसने प्रोडक्ट खरीदा, प्लस द एडिशनल कॉस्ट जो कि रिपेयर्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। ओके, सो कॉस्ट प्राइस फॉर सोहान शुड बी इक्वल टू 3000 रुपीज और उसने सेल कर दिया एट 3300। तो उसका गेन हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, दैट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, विच इज 300 रुपीज का हुआ है। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जाऊं, दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 3000 इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 10%। एज सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper bought 2 TV set at 10,000 each. 2 TV set खरीदा उसने 10,000 का। Now he sold one at a profit of 10%, another at a loss of 10%. उसने क्या ओवरऑल प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया? So एक था 10,000 का कॉस्ट प्राइस, ओके, दूसरे का भी 10,000 का कॉस्ट प्राइस। नाउ इसको 10% प्रॉफिट में बेचा और इसको 10% लॉस में बेचा। तो यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 10% ऑफ द सीपी, दैट इज 10% ऑफ 10,000। इफ यू कैलकुलेट इट विल बी 1000 रुपीज का प्रॉफिट। और यहां पर लॉस कितना हुआ होगा? 10% ऑफ सीपी, दैट इज 10% ऑफ 10,000, दैट इज देयर इज अ लॉस ऑफ 1000 रुपीज। तो एक जगह से 1000 का प्रॉफिट हो गया, एक जगह से 1000 का लॉस हो गया। सो ओवरऑल देयर वाज अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ 0 रुपीज। ओके, ग्रेट। नाउ आप लोगों के एग्जाम्स में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन टैक्सेस आल्सो। टैक्सेस इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज, और कुछ नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस। सो रिधिमा ब्रॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज 3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग है कि इंक्लूडिंग है। This term is very important. So find the price of the air cooler before the tax. We don't know what is the price of the air cooler before the tax. So we would say कि x रुपीस का रहा होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है। अभी उस पे 10% ऐड करना था, मुझे टैक्स भी तो देना है। सो इस पे मैं 10% ऑफ x ऐड कर दूंगा and I'll get the value which is including the tax, and it is given in the question as 3300. So x plus 10 by 100, x is equal to 3300, and it will be 11x by 100 is equal to 110x by 100 is equal to 3300. Okay, so x का वैल्यू आ जाएगा 3300 into 100 divided by 110, 0 से 0 and this is 30, so x का वैल्यू 3000। बेसिकली हुआ क्या
कि this 3000 is the value which does not include the VAT or the tax. Okay, great. Let's do one more question. And this question says that during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. उसने 10% का discount announce कर दिया. Now, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850? मैं ऐसा करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देयर इज अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब जितना भी आप सामान खरीदो उस पे टोटल 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है. सो व्हाट विल आई डू, मैं टोटल मार्क्ड प्राइस निकाल लेता हूं. So what is asking in the question, what would a customer have to pay for a pair of jeans and two shirts? So 1450 plus 850 into 2, that is equal to 1700. So 1450 and 1700, that is 7 plus 4 11, 3150 का टोटल मार्क्ड प्राइस आएगा, राइट. 3150 का टोटल मार्क्ड प्राइस आएगा. नाउ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस. अभी इसका 10% मतलब 3150 का 10% वुड बी इक्वल टू 315. तो इसमें से अगर मैं 315 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस वैल्यू ऑफ 3150 माइनस 315 वुड बी द टोटल सेलिंग प्राइस और द अमाउंट द पर्सन हैज टू पे. Okay, so next question. A shopkeeper gives 2 articles for free for every 3 article bought. This is another kind of discount. Basically, there are 2 kinds of discount. एक तो ऐसा हो सकता है, this we have always seen in our daily life also. एक तो type of discount हो सकता है, उसने बोला 40% off है. एक दूसरा क्या बोलते हैं कि 2 के साथ 1 फ्री, वो भी तो एक तरफ से डिस्काउंट ही हुआ. So let's try to understand how to calculate the percentage discount in such questions. So it is saying that 2 articles खरीदने पे they are giving 3 articles for free. So first of all let's assume कि एक article का marked price जो है that is x rupees. ठीक है, तो 2 article का marked price कितना हो जाएगा? 2 article का marked price would be 2x और 5 आर्टिकल का शुड बी इक्वल टू 5x. अभी ये सोचो, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू पे, कितना पैसा मैं देने वाला हूं इस 2+3 के प्रोडक्ट के लिए. मैं टोटल पैसा तो 2x ही देने वाला हूं. So I would say for the entire 5 articles 2+3 I am going to pay only 2x rupees. बट उन सब की मार्क्ड प्राइस कितनी है? 5 आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस कितनी है? That would be equal to 5x. तो मेरा डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट इज 3x. अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालूंगा दैट इज 3x डिवाइडेड बाय 5x into 100 and the discount percentage is 60%. Great. Okay, so after this we are going towards the interest part. Okay, that is simple interest and compound interest. Let's try to understand what are these two things. So in simple interest, it is quite simple first of all. So simple interest or compound interest mein there is a basic difference. Let's try to understand with an example. So 100 rupees I have borrowed from a friend at 10% interest rate. Okay, so after 1 year, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है मैंने, आफ्टर 1 ईयर मेरा 10% ऑफ 100 रुपीज का इंटरेस्ट लगने वाला है. ओके, तो ये 100 प्लस 10 बन जाएगा. ठीक है, ये 10% इस पे इंटरेस्ट लगा और एट द एंड ऑफ 1 ईयर आई एम गोइंग टू पे 110 रुपीज. अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद नहीं देता पैसे तो क्या होगा कि फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा और ये जो 10% है दैट विल बी ऑन द इनिशियल वैल्यू. ऑलवेज इट विल बी ऑन द इनिशियल वैल्यू. तो अब मैं कितना पैसा दूंगा? 2 बार इंटरेस्ट लग गया तो 100 प्लस 10 प्लस 10 ऐसा कुछ करके. सिंपल. अगर दूसरे साल भी नहीं दिया तो कितना पैसा लगने वाला है? फिर से मैं इनिशियल वैल्यू पे 100 प्लस 10 प्लस 10. This process is for simple interest. Now if I talk about compound interest, that is quite dangerous. Okay, let's see. So 100 rupees in the first year I have taken at compound interest. So 10% इस पे लगा तो 100 plus 10 मेरा total the amount that I have to pay is equal to 100 plus 10, that is 110. Okay, now
अगर मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं दिया तो सिंपल इंटरेस्ट में द इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल गेट्स चेंज्ड एवरी ईयर और एवरी ड्यूरेशन, हर ड्यूरेशन में इंटरेस्ट बदलता रहता है. नाउ इन द सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट विल बी लिवाइड ऑन दिस न्यू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल चेंज हो गया मेरा. ओके, सो अभी इंटरेस्ट, ये वैल्यू कितनी है 110, तो अभी इंटरेस्ट 110 पे लगेगा, मतलब 11 रुपए. यहां पर 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा, यहां पर 11 रुपए एक्स्ट्रा लगा. अभी अगर मैं एक साल और डिले कर देता हूं तो ये बन गया 121 और ये लगेगा इस पे पुरानी वाली वैल्यू पे. और अगर 121 पे 12.1 का इंटरेस्ट और ऐड हो गया विच विल बी इक्वल टू 133.1. नाउ वी कैन सी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ईयर तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे 1 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड ईयर तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में 3.1 रुपीज ज्यादा देने पड़ रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल कीप्स चेंजिंग एवरी ड्यूरेशन. और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. So let's understand what is the formula for compound interest. Formula for simple interest. So simple interest ka there is quite simple formula which is principal into rate into time divided by 100. Okay, and always we need to remember a formula that amount is equal to principal plus interest. तो अगर simple interest में if I want to calculate the amount it should be equal to principal plus P into R into T divided by 100. As simple as that. Now let's do a few questions on simple interest. So a man borrowed a certain amount at 15% simple interest. So the rate is given to you as 15% and pays back the entire amount after 4 years. So the term is equal to 4 years. If he paid 8,000 after 4 years, how much did he borrow? So basically total amount दे रखा है which is equal to 8,000, but मुझे principal नहीं पता. I don't know what is the principal. तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो अमाउंट इज 8,000 and principal we don't know. Okay, this is equal to principal plus P into R, that is 15 into T divided by 100. Okay, so 5315 52045. मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं that 8,000 is equal to 8 by 5 into P. After doing the entire calculation, I'll get the P का value as 5,000 rupees. मतलब the initial principal that the person borrowed was equal to 5,000 rupees. Another question. So it is saying that an amount placed at simple interest doubles in every 4 years. अभी मतलब कि कोई प्रिंसिपल था वो डबल हो जाता है हर 4 साल में. ओके, वो 2p बन जाता है. सो इसको करने का है ना एक बहुत सिंपल सा तरीका है. तो इन 4 years हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड. पहले p था वो बन गया 2p. सो आई कैन से दैट द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इज p. तभी तो p प्लस p बन के 2p बना. In how many years it will become 6 times. तो अगले 4 साल में फिर से ये p और ऐड करेगा, मतलब it will become 3p. फिर 4 साल में ये 4p बनेगा, फिर 4 साल में ये 5p बनेगा और फिर 4 साल में ये 6p बनेगा. मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is 20 years. A total of 20 years will be taken for the money to become 6 times. Perfect. Now, हमने compound interest समझ तो लिया क्या होता है, but let's try to get the formula. So the formula is, in compound interest, the total amount that is needed to be paid after the duration completes is equal to P into 1 plus R upon 100 whole to the power n, where your A is the amount, P is the principal, R is the rate of interest, and N is the number of durations of compounding. Okay, so let's understand. Let's do a few questions and try to understand how to apply the formula.
Okay, so let's take this question. So Kashvi borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded annually. What amount will she pay at the end of 2 years to clear the loan? So हमें क्या पता है that principal is equal to 26,400 and the rate is given to us as 15%, and what is the amount to be paid after 2 years? Okay, so amount is equal to P into 1 plus R upon 100 whole to the power n. This is what we have to calculate. I hope that you guys will be able to do the calculation very easily. बहुत ज़्यादा कुछ difficulty नहीं है. Perfect. Next question देखते हैं. So Ayushi borrowed this much of rupees at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Nishka borrowed the same amount for the same time duration compounded annually. Who pays the more interest? So obviously I don't even have to calculate, do the calculation to understand कि interest किस पे ज़्यादा लग रहा है. Like we talked about simple interest and compound interest, ज़्यादा interest तो compound interest में ही लगने वाला है for sure. Okay, so ठीक है, but by how much also we have to calculate. So for Ayushi the principal is 12,500, P हमें पता है 12,500, rate is 12% and term is 3 years. Okay, so the simple interest would be equal to 12,500 into 12 into 3 divided by 100. इतना कुछ आने वाला है. Do the calculation. And for Nishka, the final amount would be equal to 12,500 into 1 plus 12 by 100 whole to the power 3. इससे आप amount calculate करोगे and we know that amount is equal to principal plus interest. तो interest जो compound interest आएगा that will be amount जो आपके पास आएगा उसमें से principal subtract कर दो. So यहाँ से आपको compound interest मिला, यहाँ से simple interest मिला. The difference of these two will give you the answer to this question. Great. Now let's move on to the last topic for this video, that is rate of compounding if half yearly or quarterly or anything is there. Okay, so let's understand. So एक चीज सोचो कि अगर for example your principal is 10,000 rupees, okay, and the rate of interest is 10% and number of years is equal to 2 years. Okay, 2 साल के लिए कंपाउंड like आपने बोरो किया and all those things. Now अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है, मतलब हर आधे साल में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग हाफ ईयरली, तो क्या कहानी होगी? तो हर आधे साल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. पहले हर एक साल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था. नाउ विद एवरी हाफ ईयर वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. लेकिन ये 10% जो रेट है दैट इज पर एनम. तो अगर 10% ऑफ 10,000 में निकालूं दैट विल बी 1,000. तो आधे साल में कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा? दैट विल बी 5,000, आधा हो जाएगा. तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर हाफ ईयरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू हैव टू कंसिडर वुड बी इक्वल टू 5%. आधा इंटरेस्ट ही कंपाउंड हो रहा है ना इन हाफ ईयरली. ओके, एंड नंबर ऑफ ईयर्स, अब कितने ड्यूरेशन आने वाले हैं कंपाउंडिंग के? पहले अगर एनुअली होता था तो 2 साल मतलब 2 ड्यूरेशन, अभी हाफ ईयरली हो रहा है मतलब 2 साल में हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर गोइंग टू कम? देयर आर 4 हाफ ईयर्स दैट आर गोइंग टू कम. तो मतलब अब इसको नंबर ऑफ ईयर्स को 4 आप लोगे. So your final amount should be equal to P into 1 plus R upon 100 whole to the power n. तो आपका हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो जाएंगे. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है, नंबर ऑफ ईयर्स को डबल करना है. ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस so that ज्यादा अच्छे से समझ में आए. So what amount to be repaid on a loan? So loan amount बता दिया, that is the principal. Number of years बता दिए, that is the term. And percentage per annum मतलब rate भी बता दिया. अभी half yearly है तो rate को तो half कर दो और term को कर दो double.
So isko 3. So your final amount should be 12,000 multiplied by 1 plus 5 upon 100 whole to the power 3. Iska calculation karna hai. Okay, so this was the last question of the video, and I hope that we are able to understand the entire comparing quantities, what are percentages, the ratios, the comparison between these two, percentage increase, percentage decrease, then simple interest, compound interest, half yearly, then annually, and profit and loss. So let's meet in the next video. Till then, bye bye.